2 साल पहले आई डिड माई लास्ट ट्रेक। उसके बाद घर, परिवार, काम, इन तीनों में बिजी मुझ में शायद ही कुछ इंटरेस्ट बचा था ट्रेकिंग के लिए। आई जस्ट यूज टू फॉरगेट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड विद माई लाइफ। पर एक टाइम आता है जब दिमाग काम करना छोड़ देता है और सिर्फ दिल से एक आवाज़ निकलता है कि बस हो गया, तुमसे और ना हो पाएगा। एंड दैट्स द पॉइंट जहाँ से शुरू होता है आज की कहानी। हर्षिल वैली, वन ऑफ द ऑफबीट प्लेसेस इन उत्तराखंड। और इस वैली में 5 दिन बिताने के लिए मैं आया था मेरे फैमिली के साथ। बट ये जो पहाड़ है ना, इसकी एक खास बात है। तुम जितना इसके करीब जाओ वो उतना ही तुम्हें पास खींचता है। I didn't know why I was not satisfied that time. Enjoying nice view, clear sky, beautiful landscapes, but still I was not feeling full from the inside. इसी टाइम एक लोकल से मुझे जानने को मिला कि in this valley there are 2 beautiful treks. बस और क्या चाहिए, उदास बंदे को मिल गया जो उसे चाहिए था। So now the first trek which we are going to do is Lama Top Trek. हर्षिल मार्केट से थोड़ा पैदल जाने के बाद शुरू होता है ये ट्रेक। This trek is easy to moderate level and you don't need any guide, but we hired a local guide, Sanjay ji, as the region was unknown to us. It will take almost 2 to 3 hours to reach the top. There were few tricky sections in this trail. The trail passes through pine forest, offering glimpse of the river valley and the beauty of the Himalayas. थोड़ा रुकते हुए, फोटो वीडियो लेते हुए finally we have reached at the top. The summit was decorated with colorful Tibetan prayer flags and their rhythmic flapping sounds like it was welcoming us. 2 से 3 किलोमीटर हाइक करके ऊपर चढ़ने के बाद my feeling was like I was top of the world after a long time. From Lama Top, you can see the view of Shrikant Peak, Bandarpunj Range, peaks from Gangotri Group, and the mighty Harshil Horns. Actually, this Lama Top has 3 different viewpoints, and from one of those, you can see the entire Bagori village. It was getting late, and our guide reminded us that we should head back before it got dark. By then, it was already 5 p.m. and we started for the base. And finally, we returned back to the base and headed to Harshil Center, where our guide Sanjay ji took us to his homestay and offered tea with delicious pakora. गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नया सुबह। मार्च का महीना था। वेदर फोरकास्ट वाज सेइंग दैट स्नोफॉल का चांसेस है। आई वेंट टू मेनी प्लेसेस इन माउंटेन्स। स्नो भी देख लिया,
But after traveling so many years, I still didn't get to see snowfall. तो वो एक ख्वाब जो मेरे साथ हर टाइम रहता है. Will it fulfill this time? Believe me, I really don't know. Weather in the mountains and मेरे इस ट्रिप का ड्राइवर तिवारी जी का टाइमिंग दोनों ही हाईली अनप्रिडिक्टेबल. आज हम लोग जाने वाले हैं और एक ट्रेकिंग के लिए. इस ट्रेक के बारे में शायद ही लोगों को पता है. सो टुडे वी हेडेड टूवर्ड्स धराली विलेज, जहाँ से शुरू होगा आज का ट्रेक, एंड जिसका नाम है 7 ताल ट्रेक. हर्षिल वैली में पहाड़ों के ऊपर 7 नेचुरल लेक्स हैं, और इन सभी को देखने के लिए हम लोग फाइनली पहुंच गए धराली विलेज. थ्रू द धराली विलेज आवर ट्रेल गोज अप टू द माउंटेन्स, और जितना हम लोग ऊपर चढ़ते रहे चारों तरफ नज़ारा बदलता गया. After hiking for almost 30 to 40 minutes, we first saw fresh snows. And after that, it was nothing but a white dreamland. Every turn on this trail rewards you with a stunning view. I just couldn't believe my eyes. सात ताल और 7 रिदम, उसी के नाम से ये 7 ताल जिसमें कुछ अभी बचा है. And the first one was मृदंग ताल. It was almost 1.5 किलोमीटर और अभी भी आधा रास्ता बाकी था. But the trail in front of us was totally covered with thick layer of snow. We started again, but it was tough. You know, snow कुछ टाइम के लिए और दूर से ही अच्छा लगता है. हकीकत में it's real tough. We tried to hike for few meters, took rest, enjoyed, clicked photos and videos, and decided to return back. This 3-kilometer trek is labeled as easy to moderate, but in winter time with snow, it becomes really hard. So this time I couldn't complete this trek, but I will definitely return back to do it again. उस दिन मन में तो दुख था, as I was not able to complete this trek, but nature कुछ और ही सोचा था मेरे लिए. रात का 3. तिवारी जी फोन करके बोलने लगे, सर बाहर निकल कर देखो एक बार.
Kerala snowfall. I can't explain the feelings I feel there. I was confused, dumbfounded. I was madly taking photos and videos of those moments. It was totally crazy time for me. It was a once in a lifetime moment. So Harshil Valley is not just for 2-3 days trip. If you want to explore like me, do experience these 2 treks, and I can assure you, you will never ever forget these memories in your entire life.